Honorable Dias, a respected MP Behra sir, Principal Secretary Sagar sir, Sundaram sir, today's host and our friend Dr. Ravi Gupta ji, Somesh Agarwal ji, Hassan ji. I've been told that you will be leading the AI domain here. Today I'm very happy and glad to be a part of this event. I was little late due to the delayed flight, but very much excited to join and be the part of this event. Representing the Ministry of Electronics and IT, Government of India, I look into major things like cloud, data center, some aspects of AI, responsible AI, cyber security, NIC, NAGD, and basically e-governance, also DPI. So when we showcase our story of digital India in India and abroad, to also to our friendly foreign nations, DPI is the main thing which is a premier product. As we all know, digital public infrastructure, one of the premier platforms like DigiLocker, Umang, even UPI, belong to MITI, Ministry of Electronics and IT. And in fact, let me tell you, any DPI, PM Gati Shakti ho, GEM ho, Bhashini ho, FASTag ho. In my previous ministry, I was in North. I was PS to Minister Gadkari ji for 6 years. I worked very closely with the FASTag DPI, and a lot of work also has been done in UP. So my point is the technical platform is IT. So as मंत्री जी ने भी कहा सबसे पहले और सांसद जी भी कह रहे थे कि IT is everywhere. Today you can't ignore IT. In the same way AI. If we say that we are missing AI, then we are missing everything. So today AI is, I don't think AI is an emerging trend. AI is a part and parcel of today's life, today's project, and everywhere you will find daily you are connecting somewhere to some AI product or some application or something. Today India has achieved a lot of things in IT world over. Our DPIs are showcase given to many nations. In the last year of G20, 54 DPIs were listed among 16 countries, where India had almost 16 DPIs. And just one relevance, yesterday we had an MOU with Fiji, the country Fiji, where we will be working very closely with Fiji. So in that way, we are working with more than 20-25 nations, providing them data servers, our DPI like DigiLocker, Aadhaar, Citizen Stack, Citizen ID. So there's a big thing going on in Citizen ID. Because in India, we have leapfrog. In last one decade, last 10 years, we directly took over many things, and we cover almost 30-40 years. 3-4 decades were covered in 10 years to the way of UPI, Aadhaar, and mobile connectivity. We call it JAM. That is the Jandhan account, the Aadhaar, and the mobile connectivity. The JAM trio made India super fast and foremost in the world. Leave also there are other DPIs I will say, but these premier DPIs have given us a lot. About AI, Ministry of IT is doing a lot of projects. I know UP government is also doing a lot of AI projects. Our projects are for the people, for the citizens of India. For example, e-Sanjeevani. So e-Sanjeevani basically a patient, a citizen can contact to a remote doctor, and there is a data set of all the medicines and prescription. And I've myself tried.
Last year in G20, one of the representatives of a foreign nation fell ill in Bangalore, and our ex-secretary requested her, "Why don't you try E-Sanjeevani?" And she was amazed. She was sitting on the chair. She interacted with the computer and the AI system, and the remote doctor based in Nagpur, he provided her the prescription and all, and she was fascinated. Last year, a German minister bought some vegetables of 20 rupees in Delhi, and that was a national news in the front news. So anyway, I will be speaking on DPI in the post-lunch session. My point is that today India have made great strides, and DPI is the most valuable platform we have given to our people and to the world. Cyber security. Cyber security, again, I will touch little. I am looking after Section 699 authority of blocking. I block the tweets, the harmful content on the net. Many things, deepfakes. So it's a very interesting assignment, but let me tell you, many of these things don't come to you. 99% of the things are blocked before you see. Millions of URLs and tweets and accounts are blocked already by the social media itself. And very less come to us to block. And there are many harmful content. There are 36 types of harmful content in the world where we deal with the police, with the MHM, Ministry of Home, and all the social media intermediaries like Meta, Twitter, and all. Deepfakes today are a very big challenge. We are working how to decode it and how to work on it. Again, about many other cyber security threats like VPN. You must remember there were bomb hawks call in between to the in the civil aviation industry, and we were struggling to block it. And we were quite successful in bringing it down because that's a loss, huge impact on the economy, on the people, and all. And also, when we talk about cyber security, your personal data also comes into play. So we are sitting here, and till today is like your data has been used, you get calls, your mobile number is leaked, you feed something, and then it is sold by someone to someone you don't know. But today with the DPDP, the Digital Personal Data Protection Act, which has been notified and the rules will soon come out, which will come into force. You know what is the penalty? 250 crores is the penalty for anyone data fiduciary who will break it and not take your consent before sharing your data. In a good way, for national purpose, strategic purpose, scientific research, there are exemptions. But once this law is in force, I think the personal data of all the citizens of India will be protected, and that will go in a long way in data sovereignty and data protection of the citizens of India. Uh, Interestingly, yesterday I was in a meeting of Prayagraj Mahakumbh Mela, and I was just talking to Sagar sir. ITs were there. See, if you imagine a Mahakumbh Mela in Prayagraj and without IT, you can't. So the navigation system will be all with the help of Google, is all IT based. BISAC, our Bhaskacharya Institute of Global Satellite Navigation, have given some inputs, and we are in touch with the team. So all the people who are coming for the Mela, the parking, the all the entry, the exit, the guards, which will be all navigated on an online platform with the help of Google in the Mela. Also, there will be an AI chatbot or WhatsApp. I was just discussing with member of parliament sir about this. Ki today, like WhatsApp DPI. What is WhatsApp? WhatsApp, Amazon also are DPIs. They are private DPIs, but today part and parcel of all of us. So it will be a part of the system which will facilitate for a smooth and efficient system movement, information, awareness in the big Mela. Many things are going on. Many times I just compare my previous assignment of road infrastructure with this digital infrastructure. I was into roads, so that was also a very happening assignment where we were into Bharat Mala, and
Also with concern with UP, we are in touch with the OPEDA and all these expressway which are coming. Let me tell you, Uttar Pradesh again, apart from IT, in roads and state highways also have done a marvelous task. And it's really, I'm just not saying it because I'm here and I have to say something. No. I'm saying because Uttar Pradesh have really done wonders in the road work, be it the PPP policy, the BOT policy. You can see the Delhi-Agra connectivity, all connectivity, major bridges over Ganga and all. So many things happen, but it happens with a will. I remember one project, because see, IT is also about project management. Then road is also about project. So there is a Zojila project. Zojila is between Srinagar and Leh. It's a tunnel. And the tunnel cost was almost 12,000 crore. So my minister said कि we have to decrease this cost. 12,000 crore जो है लोगों के जेब से पैसा जाएगा, इतना कैसे करेंगे? So we were sitting, and I think many of this team also belong to UP, like RK Pandey, अभी संतोष सर आए हैं, chairman NHA and all. So regarding Zojila projects, we were like thinking how to go about and how to decrease the cost. But then we redesigned the technical qualification, the financial, and saying that even a medium level partner can also participate, making it on a single tube tunnel with a cross section of dimension. So there were very learning experiences when you deal with a project. When you deep dive into a project, let it be a IT project or a road project, you get a lot of interesting things. So then we floated it. You'll not imagine about a 12,000 crore project which had failed almost for 2-3 times bidding, got successfully floated and bidded. For the exact cost we had floated was 4,500. It was picked up at 4,522 crores. Like a lot of set of engineers, a team, consultant, all teamwork. But as I said that it's possible. So such a big projects which can come up to 1/3 of the cost, and today half of the tunnel is built. I think in 2026-27 the tunnel will be open and it will save 3 hours. If you travel from Srinagar to Reh, it will save 3 hours. I am mentioning this project because again at the back end there is ITMS, Intelligent Transportation Traffic Management System. You go from Delhi to Mumbai, from Delhi to Jaipur, there is ITMS. Today Delhi Meerut you go in 40 minutes. Earlier it was 3 hours, 4 hours. Again the back end there is IT. It's ITMS. You can see the number of vehicles going, the incidents happening, the accidents happening, and it helps the police, the agencies, the contractors, all stakeholders involved in a project, because IT is at the back end. I will talk about UP. Uttar Pradesh have done a marvelous work. And as Honorable Sir mentioned in early morning about the data center in Noida, yes, the UP data center policy is one of the best. We all request all the states basically to imitate it and see how, if state like UP is doing a good in data center policy, all the state can do it to promote and facilitate data parks. The data center in Noida is one of the world class, North India's only hyperscale data center, and one of Asia's largest, we can say. Because if a policy, IT policy facilitates the private sector, the private sector is also ready to come, to build, to operate, and to work. So this has been showcased by Uttar Pradesh state. Also, as I look about cloud, in cloud also many things are going. We in Government of India today have 23 to 24 cloud service providers empaneled. In there again, there are the Indian players, there are the foreign players. So our core concern is again best services, optimum services from the optimum resources, and addressing the needs of the cyber security, and also connecting to the emerging trends like AI, IoT, blockchain, and etc. Uttar Pradesh again have done a wonderful job in all e-governance platform. Let it be Jan Sunwai, CSE. Sir was mentioning about DBT. So direct benefit transfer, let me tell you again, is one of the best DPIs, where you'll not believe $27 billion have been saved in India itself. क्योंकि वो पैसा सीधा हितग्राही के खाते में जाता है. पैसा सीधा हितग्राही के खाते में जाता है. There is no leakage,
no sampling of funds, and this has been achieved in the last few years. Imagine कि आगे जाके सभी योजनाएं, पेंशन, स्कॉलरशिप्स, हितग्राही मूलक योजनाएं, द नेशनल पेंशन बेनिफिट स्कीम, फार्मर्स, पीएम किसान, ऑल आर डीबीटी। ये पूरा पैसा जो है सभी हितग्राही को खाते में जाता है, एंड इट हेल्प्स अस टू डायरेक्टली सेव द मनी एंड गिव इट टाइमली। उत्तर प्रदेश और एक अच्छा काम जो कर रहा है वो है स्टेट फैमिली रजिस्टर में। भारत में सिर्फ 6-7 राज्य है। हम जब दिल्ली में बैठ के सोचते हैं कि हमें पूरे लोगों का, सर आप बैठे हो फर्स्ट टेबल पर, हम आपसे बार बार एक ही जानकारी, आपका नाम क्या है, उम्र क्या है, आपका सर्टिफिकेट चाहिए, अगेन एंड अगेन गवर्नमेंट आज द सेम थिंग। हमने सोचा कि क्यों ना ये एक ही बार मांग लो, उसकी एक पूरा डेटा बना लो और उसी को बता दो। अगर कोई गांव का किसान है कि भाई आप ये उम्र के हो, इस वर्ग से हो, तो आप आवास के लिए एलिजिबल हो, आप पेंशन के लिए है, या जो भी आपके बच्चे जो है स्कॉलरशिप के लिए है, या आपकी जो माता जी है वो वृद्धावस्था पेंशन है, जो भी है हितग्राही मूलक है उसके लिए लागू हो। तो एक बार ये डेटा पूरा ले ले, क्योंकि आज हमारे पास आधार भी है, आज हमारे पास उसका खाता भी है, उसके बाद इतर सभी जानकारी जो स्कूल से लेके कॉलेज, आंगनवाड़ी, जीएसटी, मोबाइल नंबर, सभी प्रकार की जानकारी है। तो परिवार आईडी एक परिवार की पहचान होगी और सभी नागरिकों की एक आईडी होगी, जैसे आधार की आईडी, बट आधार इज लाइक मोर ऑथेंटिकेशन एंड like an it's also an ID, but not for all the benefit which we can give through some social welfare schemes. 6 राज्य जिसमें यूपी, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनके साथ हम काम कर रहे हैं कि पूरे आपके राज्य की जो पूरी जनसंख्या है, इन सबकी जानकारी एक रजिस्टर में इकट्ठा करके हम उनको बताएंगे। एक बार ये डेटा वेरीफाई हो गया, हम उनको बताएंगे कि आपका परिवार, आपके परिवार का हर एक सदस्य, चाहे फिर वो 2 महीने का बच्चा भी है, उसको आंगनवाड़ी में कौन सा पोषण आहार क्या है, या फिर उनके घर में जो अगर 80 साल के उनके पिताजी है वो किसके लिए लाभान्वित हो सकते हैं, पूरी जानकारी स्कीम्स की हम एआई के साथ, एआईएमएल के साथ क्वेरी करके, एंटाइटलमेंट बेस्ड अप्रोच। पहले था कि आप मांगिए फिर हम सोचेंगे हम देंगे, नहीं, अभी आप एंटाइटल हो, हम बताएंगे आप एंटाइटल हो, एंड हम आपको बताएंगे कि हम इसका लाभ, पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, राशन हो। तो यूपी इसमें भी जो है काम कर रहा है, और ये इनका एक जो मॉडल है वो भी एक अच्छा मॉडल है, जिसमें सर्व प्रकार की जो है लाभ और वो दिए जाते हैं। इसके एक दो और फायदे हैं, जैसे कि कोई स्कीम है और आपसे बार बार पूछा जाता है कि आप पात्र है कि नहीं, पात्र है या अपात्र है। एक स्कीम है, मान लो कि आवास देना है, और उसमें 2 नियम है कि आपके पास गाड़ी नहीं हो और आपका 10 लाख के ऊपर आपकी आय न हो। तो बिना आपके पूछे सीधा डेटाबेस में, वो सीबीडीटी के डेटाबेस, इनकम टैक्स के डेटाबेस में और आरटीओ के वाहन के डेटाबेस में क्रॉस रेफर करेगा, और वो उसको, जो हम टेक्निकल भाषा में सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है उसको बोलते हैं, उसको लोकेट करेगा और ढूंढेगा कि भाई इसका नाम ना इनकम टैक्स की उस सूची में है जो 10 लाख रुपए से ऊपर की आय है, या फिर इसके पास गाड़ी नहीं है क्योंकि इसका कहीं भी वाहन में इसकी आरसी या उसके नाम से कोई गाड़ी रजिस्टर नहीं है। तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, सिस्टम में ये जानकारी है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि बहुत सारे डेटा सेट्स है आज हमारे पास, सर 4 लाख डेटा सेट्स है, पर उसमें से क्रेडिबल डेटा सेट्स कितने हैं, वो एपीआई 2.5 लाख एपीआई है हमारे पास। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एक्सचेंज करके, व्हाट इज डिजी लॉकर। अब बेसिकली डिजी लॉकर इज एन डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। एक राज्य जो है उनके कांस्टेबल भर्ती परीक्षा बिना किसी इंटरव्यू के
डिजी लॉकर पे जो रिकॉर्ड है, सर आप एजुकेशन देख रहे हैं, यू विल बेटर गेट व्हाट आई एम सेइंग। 10th 12th एकेडमिक रिकॉर्ड होता है पूरा, सीबी सेंट्रल बोर्ड का और एकेडमिक्स का पूरा डिजी लॉकर में है, एंड दे आर सक्सेसफुली डूइंग इट। पूरी मेरिट जो है डेटा एक्सचेंज से वेरीफाई होके आती है, और उसमें आप सीधे आपके परिणाम ला सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मुझे लगता है मुझे मौका दिया रवि गुप्ता जी, धन्यवाद। सांसद जी, सागर सर, शनमुगम सर, हसन जी, आप सभी का धन्यवाद। और उपस्थित सर्व जो हमारे आज के प्रतिभागी है, ऑडियंस है, साथी है। एसटीपीआई के बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैं अगर एसटीपीआई के बारे में नहीं बताऊँगा जिसके लिए मैं आया हूँ, आई थिंक इट विल बी इनजस्टिस, क्योंकि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में एसटीपीआई का एक बहुत बड़ा रोल है। सॉरी, मेरे मुंह से मध्य प्रदेश इसलिए निकला क्योंकि मेरा कार्डर मध्य प्रदेश है, तो आदत है भोपाल में बात करने की, तो मध्य प्रदेश आ जाता है। बट उत्तर प्रदेश रियली अ ब्यूटीफुल स्टेट। मैं पहली बार लखनऊ आया हूँ। एसटीपीआई का लगभग उत्तर प्रदेश में, अच्छा, एसटीपीआई हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एक संस्था है जो पूरे भारत में एक सेटअप है, और यूपी में एग्जिस्टिंग 5 सेंटर है, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मीरठ, और जो अपकमिंग सेंटर्स है वो है आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली। आज हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो लगभग 101 है। इंक्यूबेशन सेंटर वो है जो थोड़ा फंडिंग करेंगे, थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट देंगे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे उन स्टार्टअप्स के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। उसी के साथ आज टोटल हमारा उत्तर प्रदेश से जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है वो है 42 करोड़ नहीं 42,415 करोड़, बहुत बड़ा फिगर है ये। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर एक्सपोर्ट्स है वो है 1200 करोड़। उसी के साथ वैसे हमारे पूरे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है एसटीपीआई से जो हो रहे हैं वो है 1 लाख करोड़ के, जिसमें यूपी का एक बहुत बड़ा रोल है। हम अभी एक नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम भी ला रहे हैं जिसमें लखनऊ और प्रयागराज शामिल है। उसी के साथ एक सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप हम ला रहे हैं जिसमें मेडी इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स भी है, जो लखनऊ में स्थापित होगा। आने वाली जो हमारी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश के लिए भारत सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की, इसमें सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्मार्ट एग्री, ये एग्रीटेक स्मार्ट एग्री जो है ये प्रपोज है, और एक एसिस्टिव टेक्नोलॉजी ये आईआईटी प्रयागराज के साथ स्थापित होगा। आखिरी में जो एक लास्ट है वो है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्मार्ट सिटी, जो बरेली में हमने प्रस्ताव दिया है। ये तीनों जो है वो प्रस्ताव है, और मुझे पूरा विश्वास है ये जल्दी ही जो है पूर्ण होंगे और शुरू होंगे। मैं पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।